of the appropriation bills relating to the following demands after they are passed by Lok Sabha. 1. Demand for grant on accounts of Union Territory of Jammu and Kashmir for 2024-25. 2. Supplementary demands for grants of Union Territory of Jammu and Kashmir for 2023-24. All these taken together 8 hours. Consideration and passing of the following bills after their introduction. The Water Prevention and Control of Pollution Amendment Bill 2024, 2 hours. The Public Examination Prevention of Unfair Means Bill 2024, 2 hours. The Constitution Scheduled Tribe Order Amendment Bill 2024, taken together with the Constitution Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order Amendment Bill 2024, 2 hours. The committee also recommended that the lunch hour may be skipped on the remaining sittings of the House during the session in order to dispose of the business before the House. Statement regarding government business, Shri V. Muralidharan. With your permission, sir, I rise to announce that government business for the remaining part of the 263rd session of Rajya Sabha will consist of 1. Consideration of any item of government business carried over from today's order paper, which contains discussion on the motion of thanks on the President's address. 2. General discussion on interim Union Budget 2024-25. 3. Consideration and return of the appropriation bills relating to demand for grants on account 2024-25 and supplementary demands for grants 23-24. Consideration and return of the Finance Bill 2024 after it is passed by Lok Sabha. 5. General discussion on interim budget for Union Territory of Jammu and Kashmir 2024-25. 6. Consideration and return of the appropriation bills relating to A. Demand for grants on account of Union Territory of Jammu and Kashmir 2024-25 and B. Supplementary demands for grants of Union Territory of Jammu and Kashmir 23-24. 7. Consideration and passing of the following bills after their introduction. A. The Water Prevention and Control of Pollution Amendment Bill 2024. B. The Public Examination Prevention of Unfair Means Bill 2024. C. The Constitution Scheduled Tribes Order Amendment Bill 2024. D. The Constitution Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order Amendment Bill 2024. And E. The Jammu and Kashmir Local Bodies Laws Amendment Bill 2024. Honorable members, one second. Honorable members, Leader of the House and Leader of the Opposition have conveyed to me that they have matters of urgent importance which in their wisdom needs to be raised in the House. I would appeal both to the Leader of the House and Leader of the Opposition that we in this House must follow the rules and maintain absolute discipline and decorum. Leader of the House, then Leader of the Opposition. माननीय अध्यक्ष जी, and hear both of them peacefully. माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक बहुत ही गंभीर घटना जो कल घटी है उसकी तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और आपत्तिजनक एक वक्तव्य प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता जो कोई साधारण कार्यकर्ता नहीं है लेकिन एक कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री के भाई हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, संसद सदस्य भी हैं। What is your point? उन्होंने कल एक वक्तव्य किया, वी विल बी फोर्स्ड टू डिमांड अ सेपरेट कंट्री। फिर वो कहते हैं देयर वाज नो अदर चॉइस। फिर वो आगे कहते हैं देयर वाज नो अदर चॉइस but to ask for a separate country. All southern states have to raise their voices
demanding a separate nation. माननीय अध्यक्ष जी, ये कांग्रेस की जो विभाजनकारी सोच है, जिस प्रकार से शुरू से इतिहास में हमने कांग्रेस का व्यवहार, उनका काम करने की पद्धति और देश को बांटने का काम कांग्रेस ने समय समय पे किया, ये इसका एक और उदाहरण है। माननीय अध्यक्ष जी, जब हम सदन में आते हैं तो आज के दिन तो चुनाव लड़ने के लिए भी एक शपथ लेनी पड़ती है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहती है कि जब हम सदन के सदस्य बनते हैं तो हम शपथ लेते हैं। आई solemnly affirm or I swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India and faithfully discharge the duty upon which I am doing. माननीय अध्यक्ष जी, अब ये छोटी मोटी घटना के रूप में हम इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ ये देश को बांटने की सोच है। जिस प्रकार से देश के संविधान के ऊपर ये आहत है, देश के संविधान का अपमान है, जिस प्रकार से देश की एकता और अखंडता के ऊपर ये अपमान किया गया है। हम जब शपथ लेते हैं तो देश की सॉवरेनिटी, देश की इंटेग्रिटी, ये सर्वप्रिय होती है, सर्वप्रथम रहती है। और माननीय अध्यक्ष जी, किस दिन उठाया जाता है? जब माननीय वित्त मंत्री एक देश के सामने विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं, देश के सामने अमृत काल में कैसे देश आगे जाएगा, ये पूरा विश्व कल देख रहा है कि देश किस प्रकार का मैसेज पूरे विश्व में लेके जा रहे हैं। उसी दिन ऐसी विभाजनकारी सोच, देश को तोड़ने वाली सोच, मैं समझता हूं कांग्रेस के अध्यक्ष ने इस पर स्पष्टीकरण करना चाहिए। क्या ये कांग्रेस पार्टी इस वक्तव्य के साथ अपने आप को जोड़ती है? क्या कांग्रेस की सोच में देश की एकता और अखंडता या देश का संविधान कोई मायने रखता है कि नहीं? क्या वो देश को उत्तर और दक्षिण भारत में बांटना चाहते हैं? ये कांग्रेस की सोच के बारे में मैं डिमांड करता हूं कि कांग्रेस के अध्यक्ष संसद में और पूरे देश के सामने स्पष्टीकरण करें। ये विभाजनकारी सोच कांग्रेस की कदापि भी देश स्वीकार नहीं करेगा। मैं घोर निंदा करता हूं कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी के नेताओं की, उनकी सोच की, और माफी मांगता हूं कि कांग्रेस पार्टी माफी मांगे इस वक्तव्य के लिए और स्पष्टीकरण करके उनके सदस्य से भी ये स्पष्टीकरण आए कि देश की एकता और अखंडता के लिए जो हमने शपथ ली है वो उससे सहमत है या नहीं, भारत के संविधान में वो विश्वास रखते हैं या नहीं रखते, और उनके कांग्रेस की पार्टी की स्पष्ट नीति क्या है वो देश के सामने आनी चाहिए। लीडर ऑफ द पोर्शन, प्लीज टेक लीडर ऑफ द पोर्शन। ऑनरेबल मेंबर्स, श्योर एलओपी सर, पूरी बात सुन के तब दीजिएगा। 1 सेकेंड सर, ऑनरेबल लीडर ऑफ द पोर्शन। सर, ये इस वक्तव्य के बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि वो इस सदन के सदस्य नहीं है। इस सदन के सदस्य जो नहीं होते वो लोअर हाउस के यानी लोकसभा के सदस्य हैं। रूल्स में ऐसा कोई नहीं है कि नहीं, आप ये सुनिए, अब कम कम एलओपी को तो बोलने दीजिए सर। प्लीज नहीं, अरे तुमसे भी ज्यादा बैठो, चुप पुकारते रहते सर। ऑनरेबल मेंबर्स, अरे सर, आप उनकी उतनी बात सुनने के बाद मेरी तो नहीं सुनते। नहीं, on this point, honorable leader of the opposition, you had raised a point of order when an issue about Rahul Gandhi ji was raised by Mr. Piyush Goyal. I had given my ruling on that, and my ruling was very categorical that our rules provide that this house is well within the rights under the rules to discuss the conduct even of a member of Lok Sabha. If there are allegations to be leveled, one sec. If there are allegations to be leveled against a member of Lok Sabha, then a notice is required to be given to the chairman. And I had given my ruling that when Piyush Goyal ji, leader of the house, raised that issue, Mallikarjun Kharge ji took exception. Please go through that ruling of the chair. The ruling is very categorical. Well, you see, sir, anything said
against the law which is established in this house which is enacted a business transaction rule. That cannot be allowed. Let them raise. The Prime Minister is the leader of that house. Let him raise it. Ask and bring the video. Expose simply. No, leader of the opposition is on his देश को legs. आप अकेले देश के एकता के लिए तो हमारे लोग 2-4 लोग जान दिए. तुम क्या बोलते हो? देश के बारे में हमारे कांग्रेस के लोग अपनी कुर्बानी दी है. तुम क्या है? ये कुत्ता भी नहीं मरा तुम्हारे पास. Honorable members, please take your seats. Honorable members, honorable members, honorable members, please take your seat. Take your seat. Take it. One second. I'll look into it. I'll look into it. I'll look into it. Honorable members, please, let the temper cool. We all have taken an oath under the Constitution. And any outrage of that oath is a serious matter, raising serious consequences. But coming to what the leader of the opposition has said, my ruling was very categorical. I had taken recourse to the rules. The rules of this House provide that if an issue regarding a member of the other House is to be raised here, that can be done. But if allegation is leveled against that particular member, then notice is required to be given to the chair. Now, in that specific case, when the honorable member of the Lok Sabha and leader of the Congress party had made observations outside the country, I had held twofold. One, his conduct can be debated, discussed, deliberated in this House. And secondly, after going through the record, forcing leader of the House to put everything on the table of the House, I had concluded that leader of the House had only quoted the observations imparted by leader of the Congress party outside the country. And that was my ruling. That I decided very categorically. From that perspective, Khadgeji's observation that the gentleman who happens to be member of the Lok Sabha and who, according to the leader of the House, has made an observation which I think is unprecedented, too severe to be countenanced, contrary to the oath, contrary to the spirit and essence of Constitution. I am sure the entire House will be one. And it is for all of us in togetherness to see that such kind of tendencies do not get into a groove. They need to be nipped in the bud. I am on that point. So, if you are taking, Honorable Leader of Opposition, a technical plea, that has been determined by the House. Please, please, please. Only Leader of the Opposition, please, only Leader of the Opposition, everyone will observe silence. देखिए सर, This is a very, very serious matter. Please. सर, Please, sir. तो मैं दो ही शब्द बोला कि एक तो सदस्य नहीं है, दूसरा उन्होंने, मैं सुना कि आज के टीवी में कि उन्होंने कहा मैं ये नहीं किया हूं. अगर किया है तो प्रिविलेज को वहां पर भेजने दो, वो करने दो. तीसरी बात बोलता हूं, अगर कोई भी देश को तोड़ने की बात किया, हम कभी सहन नहीं करेंगे, चाहे वो किसी पार्टी का हो, चाहे मेरे पार्टी का हो, चाहे उनके पार्टी का हो, चाहे और किसी के. इस देश को एकता रखने के लिए कोई कहे या नहीं कहे, मैं खुद मल्लिकार्जुन खड़गे होके कहूंगा, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हम एक हैं, एक रहेंगे, एक देश रहेंगे. इसीलिए इंदिरा गांधी अपनी जान दी और राहुल गांधी जी अपना जान, सॉरी, राजीव गांधी जी, सॉरी बोला, सॉरी, आई एम सॉरी, कैन विड्रॉ इट. सो राजीव गांधी जी जान दिए
अरे ऐसी पार्टी कभी ऐसा देश तोड़ने की बात करती है और देश को अलग बनाने की बात करती है। हम कभी इसको सहन नहीं करेंगे। लेकिन जो चीज उन्होंने नहीं बोले, नहीं कहे, उसको यहाँ पर दोहराना ठीक नहीं। One second. Honorable members, making a statement is fine. Fact of the situation is that nationally and globally, a message has emanated in public domain that a member of parliament had categorically said so. I direct, invoking my authority, Leader of the House Piyush Goyal, to put it on the table of the House. And these issues cannot be taken lightly. It is not an issue which is in the domain of the other House. It is equally our prerogative, our constitutional ordainment, and such a person is required to be visited with exemplary consequences. I will look into it, and what you put on the table of the House, Leader of the House, you will put it on the table of the House, and I direct my secretariat to share it immediately with Leader of the Opposition. Yes, sir. I will place it is in Kannada. One. The recording. No, put it on the table of the House. Sir, Put it on the table of the House. sir, one more point. I have already Yes, written please, take it. a letter to you regarding Sir, I the have not received your letter, but I have received your message. message in. No, No, all the letter writing is I out. have given. Sir, your No, deputy- whatever. Okay, Sir, your message. deputy, Apart from that letter. your Okay, deputy thank leader you, was sir. good enough to see me. Thank you. Sir, in Jharkhand, one issue has arisen. One second, please, listen to him. These are issues. उसमें जो झारखंड के चीफ मिनिस्टर रिजाइन किए, करने के बाद इमीडिएटली उन्होंने अपने सक्सेसर का नाम दिया और सपोर्टर्स की लिस्ट दी और नियरली 43 का सिग्नेचर था और 4 लोग अभी बाहर थे, 47 लोग What is the point, sir? What is the point? 47 के ये थे और साहब उन्होंने Please, साहब उन्होंने उसके बारे में कोई अगली व्यवस्था नहीं बनाई। ऑलवेज क्या होता है कि हम भी पॉलिटिक्स में हैं, आप भी जानते हैं कि इमीडिएटली क्या बोलते हैं, टिल अल्टरनेट अरेंजमेंट ही मे बी कंटिन्यूड। और अरे सुनो भाई, बाद में कुछ तो बोलो। please, और I am here to take a call. इमीडिएटली जब लिस्ट देते हैं उसको, आप इमीडिएटली बुला के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेते हो। लेकिन इस केस में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए उन्होंने 10 दिन का टाइम दिया और आज 12:30 बजे वो वोट एक में ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, एक तरफ यानी देखिए संविधान के धज्जे कैसे उड़ाए जा रहे हैं। एक तरफ हमारे नीतीश कुमार जी इधर रिसिग्नेशन देते हैं, इधर रिसिग्नेशन देते हैं, उधर वो वोट लेते हैं। तो ये क्यों नहीं हुआ झारखंड में? ये क्यों नहीं हुआ? अगर वो हो सकता है 12 घंटे में रिसिग्नेशन हो सकता है, 12 घंटे में लिस्ट सबमिट हो सकती है। सर 1 मिनट 12 घंटे में लिस्ट होती है, 15 मिनट में उनको बुलाया जाता है, 5 मिनट में वोट लिया जाता है, 2 मिनट में दूसरा चीफ मिनिस्टर बन के उनको वोट दिया। ये शर्मनाक बात है, ये तो धज्जे उड़ाएगी, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का धज्जे आप उड़ा रहे हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि झारखंड में इतना बड़ा कांड हो, इतना ज्यादा भ्रष्टाचार साबित हो, किस प्रकार से मुख्यमंत्री ने जमीन का घोटाला किया, इस सब के बावजूद कांग्रेस पार्टी अभी भी उन मुख्यमंत्री के बारे में उनको डिफेंड कर रही है, उन मुख्यमंत्री के काम के बारे में कुछ स्पष्टीकरण नहीं दे रही है, भ्रष्टाचार के विरोध में कोई बात नहीं कर रही है। ये पुनः स्थापित करता है कि भ्रष्टाचार कांग्रेस के डीएनए में है, कांग्रेस भ्रष्टाचार को स्वीकार करता है। रही बात गवर्नर की,
माननीय अध्यक्ष जी, गवर्नर के कंडक्ट को इस हाउस में तो नहीं डिस्कस होते हैं, मिस्टर इलामाराम करीम, संविधान इनको और इतने सारे कोर्ट के केसेस हुए हैं जिसमें गवर्नर को ठहराया गया है कि उन्होंने पूरी तरीके से अपने आप को सेटिस्फाई करना है। ऐसे ही एक लिस्ट कांग्रेस से तो पहले भी लिस्टें दी है, जिसका बाद में पता चलता है कि सिग्नेचर ही और किसका है, बिना पूछे भी सिग्नेचर दे देते हैं। तो कांग्रेस का जो व्यवहार है, कांग्रेस लीडर ऑफ द हाउस डॉक्टर केशव। Sir, my thing is, I have also raised this issue in this morning. Dr. Keshav. This morning I raised this issue, and the chairman was so kind that he had called me and said that he has with him the papers and documents which show that the chief minister was asked to continue till the next meeting. I said unless the notification is shown to us, we will not agree, because this country can't run without a constitution. Constitution says there has to be a government. Government has to be aided by chief minister. Whether the chief minister is this man or that man, we are not bothered. Whether Nitish goes in within 5 minutes or 10 minutes. Thing is, we have not shown the notification. There was no need for them to walk out. If you were to only tell us that there was a notification, there was a nod that that particular chief minister who had resigned what to continue till the next arrangement is made. I didn't say. I said we need to look at the notification. Yeah, right. But you said you had the notification. If it is not there, then my point still remains that this country has to run through a constitution. 1 second. Yes. No. Yes, ma'am. That when there is a member of the other house talking about breaking this country, we are being told on technical grounds you can't discuss that. But we are happily discussing the conduct of a governor who knows his position, and the walkout is in favor of the corruption. Honorable members. Sir, very senior member Keshav Raoji should listen to what I'm saying, just as I've listened to him, rather than getting up and speaking in between with such protest. The entire opposition has walked out in favor of corruption, and when we are talking about eliminating corruption, rather than saying why they want to walk out, they are coming in. We are reminded, we can't speak about the other house member, even if he is planning to break this country. But here are they questioning the functioning of the governor? Doesn't the governor know what to do? And this kind of a conduct against a constitutional authority by a party which has been in power for more than 45-50 years is despicable, sir. And Honorable Member Keshav Rao ji, please do listen to what I'm saying rather than getting up to disrupt me. You may be a senior member, but I'm sorry to say, I'm sorry to say that the questioning of governor's conduct by the Congress party, particularly when the issue pertains to stopping corruption in a state, is astonishing. To walk out on that, sir? 1 second. Honorable, one second, please. Honorable members, please, I'll give you floor. Honorable members, 1 second. Take your seat. Honorable members, on 5th April 2023, I had imparted a ruling, and I was called upon because leader of the opposition, Sri Mallikarjun Kharge ji, wanted a ruling on that. I quote, on March 13, 2023, the Honorable Leader of Opposition, Sri Mallikarjun Kharge, responding to the assertions of Leader of the House, Sri Piyush Goyal, who demanded apology for shameless way by which a senior leader of the opposition in a foreign country has attacked the democracy of India, insulted Parliament of India, unquote, raised a point of order that there could be no discussion, reflection in the Rajya Sabha on or about a member of the Lok Sabha or anyone who is not a member of the Rajya Sabha. I concluded, after bestowing earnest consideration on this momentous aspect,
I am of the firm view that there can be no issue or individual beyond the purview of discussion in the Rajya Sabha, and the same is exclusively subject to regulation by the House and the Chairman. The two precedents relied upon by the Honorable Leader of Opposition have no bearing on the issue being determined herein. I further took note of the situation that notice had to be given to me if you level allegations against a member of Lok Sabha, and that is further the authenticated record made available by Leader of the House, Shri Piyush Goyal, bears out that his demand of apology on the overseas statements made by a senior leader of opposition is factually premised and does not graduate to making allegations of a defamatory or incriminating nature. The documentation submitted by Leader of the House as per directive bears out his assertion imparted in Rajya Sabha on March 13, 2023, same being in consonance with fact situation. In view of categorical and firm constitutional prescriptions, I cannot persuade myself to sustain the point of order raised by the Honorable Leader of Opposition, Sri Mallikarjun Kharge, and the same is hereby declined. Now, what is really worrisome is that if a senior person and Leader of the Opposition rakes up the same issue on the same premise that we can't discuss it. Whether we discuss it or not is prerogative of the House. But we can discuss, and honorable members, the issue raised by Leader of the House is existential one. It is very severe, serious. I'll give you first. Yes. Yes. That we are taking it up. And in that perspective, I have directed Leader of the House to put on the table of the House the document that bears out a statement of the Member Parliament concerned. Sir, I will immediately place on record the clipping which he has, the Honorable MP has made the statement in Kannada. It's in Kannada. It's the same language that the Honorable Leader of the Opposition also knows very well. I'm sure he'll be able to understand what is said in that. But sir, it is an outrage of the Constitution, outrage of the oath that we have all taken to become members of Parliament, to become public servants. And it is to be noted, sir, that the Honorable Leader of the Opposition has not condemned the statement made by his senior colleague, has not condemned the statement by a member of Parliament of his party, despite him being the brother of the Deputy Chief Minister of their state. And it clearly shows that the Congress party is not entirely against the views of the Honorable Member of Parliament from Karnataka. In some sense, it is important that the Honorable Leader of the Opposition, who is also the leader of the Congress party, the president of the Congress party, should not only apologize to the nation, but should condemn his Member of Parliament's views, apologize to the people of India. 140 crore people today are feeling outraged by the comments, the divisionary thinking of the Congress party, and I think the other issue that was raised was only as a response, again as a diversionary tactic by the Leader of the Opposition. Honorable members, I must first, one second. I must put on record that Dr. Keshav Rao had seen me in my chamber and had raised an issue of constitutional situation. When I confronted him whether he had seen the notification, neither he had seen it nor I had seen it. And he was good enough to say without notification, we cannot proceed further. We will gather the notification, but that would again leave an issue open to us, whether we can discuss conduct of a constitutional functionary in this house where provisions are made. So lay your hands on that notification, and after going through the notification, if you feel rules permit, then you may raise. If rules do not permit,
are subservient to the law, the constitution. What I'm saying about a situation where the constitution is silent 74, when it is silent, that the chief minister resigns, there cannot be vacuum in the governance. In a parliamentary democracy, there cannot be vacuum. So once you resign, the governor either asks, the person concerned, it is not governor at all, please, I am withdrawing that word. The authorities have to ask him to continue till the alternative arrangements are made, or immediately take, as in Bihar you have done, in other states you have done. That is what I said. You said the notification has already come, wherein he has said. No, I said it has come. I am not aware of the contents. Yes, you don't know the contents. I am not aware of the contents. Yes. So the question today before you, I am raising from the Council of States, the question before the chairman, who is a legal luminary and non-legal luminary of this country. If a thing like that happens, what had happened for last 20 hours? Were we without a government? Can there be a state without a government? If the constitution is wrong, this house should take note of it and pass an amendment, pass some kind of a provision which fills in the vacuum. Sir, I think these are just diversionary tactics that different members of the opposition are raising. First the leader of the opposition, now the leader of another party. I don't know what is the connection between the two. They are trying to divert the issue from a very, very big corruption scandal in the state of Jharkhand. The important issue is the corruption in Jharkhand. The important issue is the outrage of India's constitution. And they are just trying to divert the issue to try and defend a corrupt chief minister of Jharkhand. Speaks. Corruption is only a binding matter. Well, you understand? Well, Constitution talks about the government. I am not talking about how the government. Now, what PUG does in the ministry, I am not concerned. See, you don't know. See, you must know the law. Law is one thing which goes. Honorable Finance Minister wants to say something. Yes. There are two on the top of on our table now. One is about a member of parliament belonging to the party to which the leader of the opposition belongs and to which he is the president, talking about dividing this country, sitting member of the House, Lok Sabha. And here we are being lectured on technicalities you can't speak about, and your ruling, which you've taken all care to read it out in full, says that this is not beyond this house to talk if it is a matter of such a serious concern, and it is very well established in your order. Now, instead of going by the precedent of that order, the leader of the opposition and his entire party has chosen to walk out on a matter which is on dividing this country by a member of their own party, sitting member in Lok Sabha, on an issue like this, where he claims, the leader of the opposition claims, we've given lives for the country. Not the entire party. No, I'm just, it's all right, one sir, honorable member is here. It's all right, sir, you may correct me on that ground, but the fact remains, he represents that party sitting here as a leader. My concern is a major issue of separatist language by a member who is in Lok Sabha of that party. And instead of outright condemning it and saying nothing can be before us when we talk about the integrity and sovereign unity of this country. Instead of saying that, we are being lectured on technicalities. Your ruling is not even being heard. Your ruling, which is being a precedent which you yourself sitting in the chair is quoting, is not even being heard by the members of the opposition. And they choose to walk out on an issue which is on unity of this country. And this house, whether you are in Rajya Sabha or Lok Sabha, what more can be important than the unity of this country, sir? At that time, we have learned senior member from another party in the opposition talking to us about the role of the... Honorable members. This is diversionary. This is diversionary. We need to address this question of whether this country can be divided, even as a wishful thinking, by a member in the Lok Sabha. Can any member here talk of anything else more important than that? Honorable members, one second. Please, one second.
please, sir. Please. Nothing will go on record. Nothing will go on record. Nothing will go on record. Honorable members. Oh, one second. Please take your seat. Nothing will go on record unless I say, please, sir, please. Honorable members. One second. Jharkhand ka nahi hai. Honorable members, any challenge to the integrity of this nation. One second, sir. Sir. Listen to me, sir. Nothing will go on record, Dr. Keshav. Nothing. Dr. Keshav, nothing. No. No. Can you? I am sure, honorable members, I have no doubt we represent 1.4 billion people. And it is our constitutional obligation. Any challenge, I am making a general proposition, and no one should disagree with that. Any challenge to the sovereignty and integrity of this nation has to be resisted with the full might of every institution. And this house, this house is seized of the matter. And I would greatly appreciate that the house in one voice reflects the mindset of 1.4 billion people, that such an attempt from any quarter, within or outside, has to be met with unitedly, effectively, and has to be neutralized. Matters to be raised with permission. Sri A.D. Singh, not present. A.D. Singh, oh, I should have noticed your presence. I'm here, sir. India is the third. Can I start or will he speak? He has a point of order. 1 second. You are raising point of order under which rule? 8 sub point 5, sir. 230? Rule 238.5. A member, while speaking, shall not reflect upon the conduct of persons in high authority unless the discussion is based on a substantive motion drawn in proper terms. So, Honorable Leader of the Opposition, he referred to a constitutional authority without having submitted a motion and having the motion accepted by the Honorable Chairman. So, therefore, whatever he said must be expunged from the record, sir. Because this pertains to a very high constitutional authority. Thank you. Narasimha, this will look after. Please, Mr. A.D. Singh. India is now the third largest aviation market in the world, and various airlines are increasing the number of aircraft that they are buying, and the government is also expanding the aviation network around the country. But unfortunately, with the kind of planes that the Indian aviation industry has ordered, correspondingly, we don't have that much of pilots who can do their job, because there's a lack of availability of pilot, and particularly for that Cat 3 where landing training is also not there. And government has various, as of now, 34 DGCA approved flying training organizations are in the country. Some training centers operate simulators, private flying academies are also getting licensed. Airlines are also going ahead with their own training program, but all this is not sufficient. The training facilities in India is grossly inadequate. There is an urgent need for more pilot training and flying institutes. DGCA should play a decisive role to coordinate flying training organization, pilot training in airlines and various examinations, etc., connected with the training of pilot. I urge the government to take urgent steps so that there is no shortage of pilots in the country in the future. Thank you. Thank you, Mani Sri A.D. Singh ji. Mani Sri Rajiv Shukla ji need to address alarming rise in student suicides in the country. धन्यवाद उपसभापति जी। मैं एक अति महत्व के प्रश्न पर आज सदन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। जिस तरह से छात्रों की आत्महत्या हो रही है, जिस तरह से कोटा अन्य जगहों पर छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, वो एक गंभीर विषय है और इसमें पूरे समाज को सोचने की बात है। किसी सरकार को दोष देने की बात नहीं, राज्य सरकारों को दोष देने की बात नहीं। ये एक बड़ी विकराल समस्या खड़ी हुई है। 35,000 छात्रों ने सुसाइड कर लिया।
क्योंकि कोई फेल हो गया अगर किसी एग्जाम में, कोई अगर जो है उस तरह से मार्क्स नहीं ला पा रहा है, तो ये एक बड़ा गंभीर विषय है और मैं इस पर चाहूँगा कि पूरे समाज को इस तरफ ध्यान दें। अभी प्रधानमंत्री जी का जो संबोधन उस दिन था परीक्षा पे चर्चा, उसमें भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि माता पिता जो बहुत दबाव डाल देते हैं छात्र पे, उससे भी छात्रों के अंदर बहुत बड़ा जो है संकट, उनका मानसिक संकट पैदा हो जाता है। तो मेरा ये मानना है कि जो इस तरह के जो 1000 स्टूडेंट्स का सर्वे किया था इन्होंने, CSDS ने, उनके हिसाब से जो 35,000 छात्राएं, उनकी मुख्य रूप से वजह ये थी कि several factors contributing to this distressing trend, including academic pressure, mental health issues, isolation, financial concerns, lack of support and the stigma surrounding failure in competitive exams. अगर बच्चे को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाए कि अगर आप फेल हो जाते हो तो ऐसा नहीं कि आपकी ज़िंदगी खत्म हो गई, आपका सब कुछ खत्म हो गया। तो इस तरह के जो कोचिंग सेंटर हैं या एजुकेशनल सेंटर हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए भी लोग रखने चाहिए। वहाँ पे मेंटल हेल्थ मैनेजमेंट के सेंटर भी खोलने चाहिए जो उनको इस तरह की सहायता कर सकें। और फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी, क्योंकि माँ बाप पेट काट के बच्चे को भेजते हैं तो दबाव डालते हैं कि भाई हर हालत में तू क्वालिफाई कर, अगर तुमने क्वालिफाई नहीं करा, कुछ नहीं बना, तो ये जो है हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो उस दबाव में बच्चे जो आत्महत्या कर रहे हैं, ये बहुत गंभीर विषय है और ये किसी एक के विरुद्ध या किसी एक के उसमें नहीं है, सारे लोगों को मिलकर इस पर सोचना पड़ेगा। जो मेरे 5 सुझाव हैं कि इसमें जो है एक तो मेंटल हेल्थ सर्विसेज इंस्टीट्यूट्स में क्रिएट करनी चाहिए, मैंडेटरी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर टीचर और स्टाफ को इसकी ट्रेनिंग देनी चाहिए कि कैसे ऐसे छात्रों को सावर्धन करें, उन्हें निराशा के दौर से निकालें। और इसके बाद जो है फर्स्ट एड का भी इंतजाम होना चाहिए। जो इस तरह के मेडिकल सेंटर जो ये हैं, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स लॉन्च करने चाहिए गवर्नमेंट को भी और तमाम NGOs को भी। और जो स्टिग्मा है ये कि हम फेल हो गए तो सब खत्म हो गया, इसको दूर करने के प्रयास करने चाहिए। मैं सरकार से यही आग्रह करूंगा कि इस पे जो है एक पूरा अवेयरनेस जन जागरण अभियान चलाएं पूरे देश में, ताकि छात्र इस तरह का काम न करें। निर्मला जी ने वो बात कही थी, धन्यवाद। वॉकआउट से हमारा वॉकआउट जो है ना झारखंड धन्यवाद। माननीय श्री नवाम रेबिया जी, माननीय श्री नवाम रेबिया, नॉट गोइंग ऑन रिकॉर्ड, नवाम रेबिया जी, क्रिएशन ऑफ सेपरेट ऑल इंडिया सर्विस कैडर्स ऑफ IAS, IPS एंड IFS फॉर अरुणाचल प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद उप सभापति जी। ये बहुत ही मेरा राज्य अरुणाचल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मैं इसलिए इस विषय को पहले भी सदन में रह चुका हूँ। देखिए, अरुणाचल भौगोलिक दृष्टि से नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन अब तक वहाँ अपना काडर, सेपरेट काडर ऑल इंडिया ऑफिसर्स नहीं है, लाइक IAS, IPS एंड IFS। क्योंकि जब तक अपना ये ऑफिसर आते हैं 2 साल 3 साल बैठ के चले जाते हैं, तो हमारा जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को हैम्पर करता है। इसीलिए ये मांग जो है अरुणाचल सरकार ने भी कई बार यहाँ केंद्र में रखा है और अरुणाचल विधानसभा में भी बहुत बार रेजोल्यूशन पास हुआ है। मैं चाहूँगा कि अगर अरुणाचल का डेवलपमेंट होना है और अरुणाचल के भलाई के लिए काम करना है, कम से कम ऑफिसर 5-10 साल बैठे तभी काम होगा। 2-3 साल में क्या काम करेंगे? इसलिए केंद्र सरकार से मैं दोबारा रिक्वेस्ट करता हूं, अनुरोध करता हूं कि अरुणाचल के लिए सेपरेट कैडर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज IAS, IPS, IFS मीन्स इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का जो सेपरेशन जो जल्दी किया जाए। थैंक यू। धन्यवाद माननीय नवाम रेबिया जी। डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल जी, डिमांड फॉर अमेंडमेंट्स ऑब्लिक सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू FIR, अरेस्ट एंड बेल। धन्यवाद महोदय। मैं आज सदन में और सरकार के समक्ष एक ऐसा मुद्दा रखना चाहूँगा जो कानूनी है, लेकिन उसका प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। हमारी मां महिम राष्ट्रपति जी ने अपनी बजट स्पीच के दौरान बात कही जस्टिस फर्स्ट, और जो देश में नए क्रिमिनल लॉज आ रहे हैं उसके बारे में भी कहा। लेकिन हमारे देश में जो अंडर ट्रायल्स हैं, जब उनकी हम परिस्थिति देखते हैं तो मुझे लगता है कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। हमारे क्रिमिनल लॉज में FIR, अरेस्ट और बेल के प्रोविजंस में क्लैरिटी ना होने के कारण यह पुलिस प्रशासन के लिए एक कमाई का माध्यम बन गया है।
और बहुत सारे केस भी सामने आए हैं जहां माइनर ऑफेंसेस के लिए लोगों को जेल में डाल दिया जाता है, जो कि हमारे संविधान के आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का स्पष्ट उल्लंघन है। हमारे देश की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन पर है और भ्रष्टाचार की शुरुआत भी यहीं से होती है, और जिसका सबसे साधारण तरीका है एफआईआर की धमकी। कानूनी प्रावधानों का गलत इस्तेमाल करके पुलिस शोषण करने के लिए और किसी भी कानून के किसी भी सेक्शन को अप्लाई करके लोगों को जेल में डाल देती है। पीएसआई रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2022 तक 5,70,000 कैदी थे और इसमें 75% यानी कि 4,30,000 अंडर ट्रायल्स हैं। हमारी जेल्स ओवर क्राउडेड हैं और काफ़ी केसेस में युवा, बुजुर्ग, महिलाओं को भी पुलिस गलत एफआईआर करके जेल में डाल देती है। कानून में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बेल इज ए मैटर ऑफ राइट एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। ऐसे भी कई केसेस हैं जहां हमारे माननीय जज, डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट जज बेल नहीं देते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बेल हो जाती है। इसका कारण है कि जुडिशियल डिस्क्रिमिनेशन इन ग्रांटिंग बेल, जिसमें हर जज अपने विवेक के हिसाब से बेल की कंडीशन निर्धारित करता है। मैं एक इंटरेस्टिंग केस लाना चाहूँगा सदन के सामने। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बेल देते वक्त यह कंडीशन लगाई कि विक्टिम जो मुजरिम है वो 25,000 रुपये का एलईडी टीवी किसी हॉस्पिटल को दान देगा। एक अन्य केस में ये कहा गया कि मुजरिम 2 महीना तक सोशल मीडिया का प्रयोग नहीं करेगा। मैं सरकार को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने ब्रिटिश काल के क्रिमिनल लॉज को रिपील किया और भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लाए, जिसमें एफआईआर, बेल और अरेस्ट के प्रावधानों में conclude time is over please थोड़ी सी क्लैरिटी दी गई। खत्म। माननीय श्री अब्दुल वहाब, Thank you. Mr. A. Rahim is associating concern over various problems faced by railway passengers in Kerala. Yeah, this one, Kerala, as usual, we are no special zone and all, and we are facing big difficulties, passengers. They are crowded all the railway stations, and hence, Keralites are the most respected and responsible passengers for Indian Railways, less defaulters or non-ticket travelers. 99% Keralites are traveling with tickets. And I request our ministry to go specifically 1 or 2 items. Nilambur is the station where the railway ends, and it is started by British not for the development of Malabar or Kerala. It is developed to get forces to suppress the rebellion sort of against British and take out the teak, Nilambur teak from there to UK. That is why they started. But now, after independence, it is a good, this one, Nilambur, Shornur, and connecting from there to different places. It's happening, and Nilambur is now the Amrud railway station, also Honorable Minister included. Work is going on. The problem is the speed and the electric connection and all. So I request our Minister to look into that one. And the long pending, this one, Batheri, Nanjangud, Nilambur to Bengaluru, there is an easy road, so that Keralites can, at least 150 kilometers can be saved. So Nilambur, Nanjangud, this one, projects and all, that is already done PPR, and I wish the next, this one, Minister will be looking at that one. And General Manager of Southern Railway agreed this one AC coaches from Nilambur to Ernakulam, Kottayam. So far not there. Memo trains, it is not there. And it is very difficult for us to travel. So I request our Government of India through you that immediate action should be taken for Nilambur, Shornur, Cochin and the Kottayam routes. So already we got a Rajarani Express from Nilambur to Kochuveli.
but it's very difficult for the cancer patients, those who are going for all 90% cancer patients to Trivandrum, RCC. But the train stops at Kochubeli. And again from there to Trivandrum, these auto rickshaw drivers, taxis, they were filling the people, all the 300 rupees, 400 rupees for the 5 kilometers. So I request through you to not extend, to make this Nirambur Rajarani Express to Trivandrum Central. That is our most important this one for. Thank you very much. Thank you, Mani Abdul Wahab ji. Honorable Sri M. Sanmugam need to construct laying overland bridge between Dhanushkoti, Tamil Nadu and Talai Manar in Sri Lanka. Sir, for the last 2 centuries, his name is with associate. He is to provide sea communication between Sri Lanka and Indian mainland, and many surveys and projects were prepared. Recently also Sedu Samudram Canal project that would connect the Gulf Manar and the Palk Strait was conceived, and all feasibility report were prepared, and dredging work was also started during UPA regime. Unfortunately, the BJP government came to power, it was discontinued, and ultimately it was abandoned. Our Honorable Chief Minister of M.K. Stalin last year moved a resolution in the Tamil Nadu State Assembly seeking the revival of the Sedu Samudram project, but the Union government did not give any response. From the Indian coastal corner, Dhanushkodi, Sri Lanka, Talaimanar, it is only 25 kilometers and can be easily connected with a bridge. It will improve the port connectivity and also movement of people. Dr. A. Ramaswamy Molliar committee, which was engaged by the Union government in 1955, examined the desirability of the project and found the project feasible and viable. However, it strongly recommended an overland passage instead of channel cutting through the sea. I would therefore urge upon Union government, especially the Honorable Minister for External Affairs and Minister for Road Transport, to consider laying overland bridge or undersea bridge between Dhanushkodi and Talaimanar to improve the economic and trade relation and people to people movement between India and Sri Lanka at the earliest. Thank you, sir. Thank you. Manya Srimati Priyanka Chaturvedi ji need to include HPV vaccines in the universal immunization program UIP. Sir, thank you so much for this time, for this important topic to be discussed. पर सर उससे पहले मैं 30 सेकंड लेना चाहूंगी जो आज सवेरे चेयरमैन की तरफ से रूलिंग आई कि अगर लोकसभा में कोई कुछ कमेंट करता है you are speaking on the subject. No, this is not going on record. अगर आप subject पे नहीं बोलेंगे, I will proceed further. Please listen to me. I am not allowing. The chair is not allowing. It has nothing to do with the allegations, sir. You have to speak on the subject. It has nothing to do with the allegations, sir. Priyanka ji, you have to speak on the subject. Otherwise, I am calling other person. Sri Kiran Rajesh Kumar. Time is over. Question now. Sri Kiran. Time is over. Question now. Honorable Chairman, sir, today I rise to bring to our notice. Question or nothing is going on record, madam. Question or Honorable Sri Deepak Prakash ji, Mani Sri Deepak Prakash, question. Mani Mantri ji. Agriculture and Farmers Welfare. उत्तर सभा पटल. Mani Sri Arjun Munda ji, please. उत्तर सभा पटल. पहला सप्लीमेंट्री। सर, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और कृषि मंत्रालय को अभिनंदन करना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। उनके नेतृत्व में लगातार, हाँ मेरा प्रश्न है सर। आप सवाल पूछे। हाँ सवाल है सर। सवाल है कि केंद्र सरकार ने झारखंड में ऐसी कृषि भूमि जिस पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है कि प्रतिष्ठा के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है क्या? क्योंकि झारखंड में मुख्य रूप से धान की पैदावार की जाती है जिसके लिए यहाँ पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। माननीय मंत्री जी। माननीय उपसभापति महोदय जी, जैसा कि झारखंड और पूरे देश की हमारे प्रधानमंत्री जी चिंता करते हैं कि उसके सिंचाई के क्षेत्र में किस तरह से आगे बढ़ा जाए, और मुझे बताते हुए खुशी है कि 2016 के अंदर एक स्कीम बनाई गई जिसके अंदर 3 मंत्रालय, जिसमें कृषि मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा योजना बनाकर काम प्रारंभ किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बनाई, और उस योजना के माध्यम से
मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि लगातार उसके अंदर काम हुआ और अलग अलग मंत्रालय ने, जैसा कि कृषि मंत्रालय के अंदर पर ड्रॉप मोर क्रॉप पे काम किया गया और हर खेत में पानी जल शक्ति मंत्रालय द्वारा और AIBP योजना के तहत जल शक्ति मंत्रालय और वाटरशेड के द्वारा इस पर काम किया गया और उसी का परिणाम रहा कि पूरे देश के अंदर लगातार ये जो क्षेत्र है वो क्षेत्रफल भी बढ़ा है और जिसमें जहाँ इरिगेटेड अगर खेती की बात करते हैं तो लगभग 77.9 मिलियन हेक्टेयर एरिया जो है इसके अंदर कवर किया गया है और झारखंड के अंदर भी इसके अंदर लगातार क्षेत्रफल जो है क्षेत्र बढ़ा है और मुझे लगता है कि इसके अंदर झारखंड के अंदर भी आने वाले समय में जो कि अभी 1.43 लाख हेक्टेयर है जो बढ़कर 2,37,000 हेक्टेयर हो जाएगा और इस पे ऊपर सरकार के लगातार प्रयास है। धन्यवाद। दूसरा सप्लीमेंट्री माननीय दीपक प्रकाश जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित मंत्री जी। झारखंड को 2015 और 16 और 2018-19 में NDRF से सहायता दी गई थी। उसके बाद राज्य को सहायता क्यों नहीं मिली है, जबकि राज्य में कई जिले सूखे से प्रभावित हैं और जिसके चलते झारखंड आज परेशान दिख रहा है। जी, जब भी अगर कोई सूखा पड़ता है या किसान के आपदा आती है तो उस समय SDRF फंड का प्रावधान किया हुआ है और सरकार प्रत्येक साल के प्रारंभ में हर स्टेट को स्टेट डिजास्टर फंड के तौर पर उनको फंड उपलब्ध करवाती है और इसी प्रकार से जब उनके वो फंड पूरा हो जाता है उसके बाद में अगर और आवश्यकता होती है तो नेशनल डिजास्टर फंड की स्टेट डिमांड करता है और उसके आधार पर नेशनल डिजास्टर फंड के तहत उनको फंड उपलब्ध करवाया जाता है ताकि किसान को उसकी राहत मिल सके। और मैं आपको इसमें कहना चाहता हूं कि झारखंड के अंदर भी जैसा कि वहाँ से प्रदेश के द्वारा समय समय पर स्टेट डिजास्टर फंड दिया गया और नेशनल डिजास्टर फंड के तौर पर उन्होंने अभी तक हमारे से कोई डिमांड नहीं की और उसकी वजह से, क्योंकि मुझे ये भी बताना है कि जब 2016 के अंदर 15-16 के अंदर नेशनल डिजास्टर फंड के तौर पर 273 लाख करोड़ रुपए जो थे वह अभी बढ़कर जहां मुझे देखना है कि 637 लाख करोड़ रुपए हो चुके हैं। तो ये भारत सरकार की ओर से लगातार स्टेट डिजास्टर फंड लगातार झारखंड के अंदर भी बढ़ाया गया है, लेकिन राज्य सरकार से हमारे पास में झारखंड से कोई ऐसा प्रपोजल अभी प्राप्त नहीं हुआ है जिसमें उनको नेशनल डिजास्टर फंड की आवश्यकता हो और स्टेट डिजास्टर फंड की गाइडलाइन है